Ladies and gentlemen, the bombers. और ख़वातीनो हज़रात, ये मिराज तैयारों का एक दिलकश अंदाज, एक मखसूस अंदाज में ये पैगाम देते हुए कि पाकिस्तान के दिफा के लिए इसके शाहीन हम वक्त तैयार हैं। तैयारों के साथ साथ जदीद एयरबॉर्न सर्विलेंस सिस्टम से भी लैस है। अब जो तैयारा आपके skill, speed and perfect talent are condensed in this maneuver. The legendary show is just starting. Acrobatic is exciting adventure that involves extraordinary movement. In fact, it is inexpressible, but you can just experience it with culture today. और ये देखिए, आपके दाएं जानिब से सऊदी हॉक्स सफेद धुआं छोड़ते हुए अपने अगले मनूवर की जानिब बढ़ रहे हैं। और एक शानदार अंदाज में इंतहाई नजदीकी फॉर्मेशन बरकरार रखे हुए आपके सामने एक कोऑर्डिनेटेड टर्न का मुजाहरा पेश करते हुए सऊदी अरब की एरोबैटिक्स टीम सऊदी हॉक्स। So as the team continue the bend in front of you, the boss will shortly call them into Phoenix formation. You'll see Saudi 6 and 7 move to the outside of the formation. Although this looks like a pretty easy formation to fly, this is the most difficult position that we fly, as all the pilots flying on the boss's wing are looking over their shoulders to fly formation. वेन्यू के एंड सामने अपना टर्न मुकम्मल करते हुए सऊदी हॉक्स एक इंतहाई खूबसूरत फॉर्मेशन बरकरार रखे हुए। As the team rolls out, you'll see Saudi 6 and 7 turn their smoke off and they move in behind the boss. I'm sure you've already worked it out, but the boss leads the team from the front and uses radio commands to maneuver the formation around and change formation shapes safely. ख़वातीनो हज़रात, आपको बताता चलूं कि किसी भी फॉर्मेशन की कामयाबी उसका पूरा इन्हिसार उसकी लीडर की कमांड पर है। उस लीडर के विंगमैन जब बेखौफ व खतर होकर अपने लीडर की बात मानते हैं और उसके इशारे पर अपनी फॉर्मेशन तब्दील करते हैं तो वो एक खूबसूरत मिसाल बन जाती है। So approaching from the left-hand side, the team are just about to fly a Typhoon into Spear Loop. They've started this loop at 650 kilometers an hour. As they reach the top at 1 mile in the air or 6,000 feet, the aircraft will slow down to 200 knots, almost no G-force in the top of the loop. Then as they accelerate down at the backside, the G-force comes back on and the speed increases again. और ख़वातीन फिजा में मत छोड़िए, वो जहाज़ों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। So this is the last maneuver of the first half, and it's called the 10th break. ख़वातीनो हज़रात, अपने पहले मुजाहिरे के आखिरी मनूवर की जानिब बढ़ते हुए सऊदी हॉक्स आपके सामने एक खूबसूरत बॉम्बर्स का मुजाहिरा पेश करेंगे। Not only to be accurate inside your aircraft, but also talk on the radio while flying upside down. और आपके सामने दिलचस्प मुजाहिरे का मुजाहिरा सऊदी हॉक्स की जानिब से एक जबरदस्त मनूवर आपके सामने पेश किया गया।
हरे और सफेद रंग का धुआं छोड़ते ये सऊदी हॉक आज इस जश्न आज़ादी के फंक्शन में पाकिस्तान का साथ देते हुए इस्लामाबाद की फिजाओं में और F-9 पार्क में हाजरीन की कसीर तादाद जिसमें शामिल नौजवान, बच्चे, खवातीन और मोहम्मद अफराद इस एयर शो से लुत्फानंदोज हो रहे हैं।